Assalamu alaikum and welcome to yet another episode of Toronto 360's The Sports Roundup. क्या कहा जाए, सेमीफाइनल्स हो गए हैं. फाइनल में दो टीमें जा चुकी हैं, which is न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. Congratulations to both of the teams. आज जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, एक बहुत ही टेंस्ड मैच था, ज़्यादातर हम सब के लिए, क्योंकि we were glued to the TV, right? और क्या हुआ वो अभी हम बात करेंगे. लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, बिग राउंड ऑफ अपलॉज टू देम. बहुत ही अच्छा खेला उन्होंने, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे थे बिफोर दे वेंट इनटू द वर्ल्ड कप के वो सिर्फ प्रैक्टिस खेलने जा रहे हैं, हम तो अगले साल के वर्ल्ड कप की देखेंगे तैयारी. लेकिन द टीम एक्चुअली, जो हमारे एक पैनलिस्ट जोसेफ भाई जो हैं आज यहाँ पर मौजूद, उन्होंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि इफ पाकिस्तान प्लेड एज अ यूनिट दे विल डिफीट एनी टीम, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. कि अनबीटन टीम रही टिल सेमीफाइनल. बैड लक हुई पाकिस्तान के लिए, एक बुरा दिन था पाकिस्तान के लिए, दैट्स व्हाट वी वुड से. लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान प्लेड अ वेरी गुड गेम थ्रू आउट T20. आज हमारे साथ पैनलिस्ट में हैं शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, मंसूर भाई, अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, हारून भाई, और स्काइप पे हमारे साथ हैं जोसेफ भाई. हाउ आर यू? तो आज हम पैनलिस्ट से बात शुरू करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की पहले, क्योंकि ये एक रीसेंट मैच हुआ जिसमें वी आर ऑल इन शॉक राइट नाउ. लेकिन आई वुड से, जैसे मैंने अभी इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान प्लेड अ वेरी गुड क्रिकेट ओवरऑल, और वी शुड commend them that they have came across at that particular moment. सारी टीमें जो बड़ी टीमें थी सबको पाकिस्तान ने जो है हराया, एंड दे केम टू सेमीफाइनल. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द पैनलिस्ट. हारून भाई, क्या हाल है सर? जी सर, बिस्मिल्लाह. सर, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एक टेंस मैच जो हुआ, वी वर टेक्निकली ग्लूड टू द टीवी. मैंने सुना बहुत से लोगों ने अपनी मीटिंगें कैंसिल की, छुट्टी की, राइट, एंड देन दे वर वॉचिंग द गेम टिल द एंड. क्या हुआ सर आखिर में? हसन अली के ऊपर इस वक्त सारा जो है वो नजला गिर रहा है हर किसी का, बट इज इट रियली ही ड्रॉप द कैच या वो हो गया फील्ड के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड गेम ऑफ क्रिकेट. एट द एंड ऑफ द डे एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है. इट इज अनफॉर्चुनेट दैट पाकिस्तान इज ऑन द लूजिंग एंड, बट यस इट वाज एन एंटरटेनिंग गेम. जो इस वक्त जो मैं सोशल मीडिया पे जो पढ़ रहा हूँ, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी, तो वो वहां पर जो है कोई भी, मुझे बहुत कम जो है वो आटे में नमक के बराबर लोग मुझे नजर आ रहे हैं जो बैशिंग कर रहे हैं. बाकी 99% जो है लोग कह रहे हैं कि भाई होल्ड योर हेड हाई. एग्जैक्टली, एंड पाकिस्तान प्लेड अ वेरी गुड गेम थ्रू आउट. प्लेड अ वेरी गुड गेम थ्रू आउट. आई मीन, वैसे तो हमने वर्ल्ड कप पहले मैच में ही जीत लिया था लेकिन दे प्लेड रियली वेल. किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये टीम इतनी आगे तक जाएगी. एग्जैक्टली, बट दे प्लेड एज अ यूनिट. द प्लेयर्स वर जेल्ड. और आई डोंट थिंक इट इज फेयर कि हम हसन अली को ब्लेम करें कि उन्होंने कैच छोड़ दिया. देखिए, कैच डेविड वार्नर ने भी छोड़ा, कैच एक बहुत इजी कैच स्टीव स्मिथ ने भी छोड़ा, एडम जैम्पा ने भी कैच छोड़ा. लेकिन द ओनली कंसर्न वाज, या द ओनली सिचुएशन वाज कि दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू रिकवर फ्रॉम द डैमेज, और हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी. अगर वो डेविड जो है, अगर वेड जो है वो आउट हो जाते, लेट्स से फॉर एग्जांपल, इवन हसन अली के कैच ड्रॉप करने के बाद भी वो आउट हो जाते, वी वुड हैव रिकवर्ड दैट लॉस. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इट इज अनफॉर्चुनेट, बट अगेन ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड गेम. इट वाज अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट. और मैं तो अपनी बहुत सारी मीटिंग्स भी पोस्टपोन की. यही मैं कह रहा था, काफी लोगों ने मीटिंग पोस्टपोन की, छुट्टी ली कि नहीं यार ये गेम देखना जरूरी है, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव बीन वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. मंसूर भाई, सर वार्नर, एक तो या तो हमारी लक थी कि उसको पता नहीं चला कि उसका निक हुआ कि नहीं हुआ. सर ये क्या हुआ सर? वो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. अच्छा, आप ये देखिए, वार्नर जैसा बंदा जिसको आईपीएल का भी एक्सपीरियंस है, जिसको मेलबर्न जैसे, मतलब सिडनी ग्राउंड जैसे बड़े बड़े पैक हाउसेस में खेलने का एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए ये शोर, ये प्रेशर, ये कोई नई चीज नहीं थी. अब उसको खुद देखिए, कोई भी बैट्समैन होता है ना, उसको ये निक करता है तो उसको अंदाजा हो जाता है कि यार कि मैंने निक किया. उसने कंसल्ट भी नहीं किया अपने पार्टनर. एग्जैक्टली, उसने आंखें नीची की और बस वो चला गया. ही जस्ट मूव्ड अवे. राइट. इस मीन कि वो इतना श्योर था. तो मेरे जहन में एक सवाल है कि क्या ये कहीं टेक्नोलॉजी में कोई एरर तो नहीं है? क्योंकि हमने बहुत दफा ऐसा भी देखा है कि डीआरएस लिया गया तो डीआरएस कह रहा है कि गेंद बाहर जा रही है, लेकिन बंदा एक्चुअली बोल्ड हुआ है.
So it can be a flaw in the technology, but I think वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है वो karma भी है कि उसने जो है ऑफिस की बॉल पे जो 6 मारा जो उसको नहीं मारना चाहिए था, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो इस तरीके से आउट हो गया. बट वार्नर जो जिसके लिए वो टीम में था उसने अपना वो रोल 49 उसने किए. आप ये देखें जो सेकंड ओवर से उसने मारना शुरू किया, राइट, ये उसने इमाद को नहीं सेटल होने दिया. सेकंड ओवर के बाद शाहीन ने जो पहला ओवर किया वो मतलब अगेन वही जो उसने रोहित और केएल वाला किया था. पहले ओवर में आपने फिंच को आउट करके बाहर कर दिया. हम तो सारे जो है वो we were just pumped up, pumped up, ठीक है, वो बस, और मोरल वाज बैशिंग द रूफ्स. बट अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी देखें गेम खेलने के लिए आया हुआ था और उनका जो एक रिकॉर्ड है नॉकआउट्स में अगेंस्ट पाकिस्तान, वो देखें वो सब चीजें ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया बनाती हैं. Right, that's true. क्योंकि वो जितने साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बंदे हैं. अब हमने शायद जो है वो मैथ्यू वेड को इतना जो है वो असेस नहीं किया हुआ था, लेकिन वो आया और ही सिंगल हैंडेडली 17 बॉलों पे उसने 40 समथिंग किया और सिंगल हैंडेडली वो जिता के ले गया. Right. शाहीन आफरीदी को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उस बंदे को स्कूप के ऊपर 3 छक्के पड़ जाएंगे. Exactly. लेकिन वो हो गया. तो अब जो होना था, अब वो हसन कैच ले लेता तो ये वो तो अब सारी चीजें ये हो जाता तो exactly. हो जाता, हम उसको बुला लेते तो ये मार देते, तो अब तो हम बातें ही कर सकते हैं हम सिर्फ. बट द थिंग इज दिस, ऑस्ट्रेलिया प्लेड वेल. पाकिस्तान के लिए एक क्रेडिट देना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने टॉस की इक्वेशन को ऑलमोस्ट जो है ना वो ओमिट कर दिया था. Right. मतलब टॉस हारने के बावजूद भी यू पुट अ वेरी डिसेंट टोटल कि आप ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकते थे. T20 फॉर मी इट शुड बी अ पैसा वसूल गेम. Exactly. कि आप बैठे हो, आप एंटरटेन हो. हमने 3 घंटे फुल एंजॉय किया. And this was a पैसा वसूल. This was a पैसा वसूल. Even though आखिरी ओवर तक हम गए और हमारी जो है वो हालत डिफरेंट थी, हम नाश्ता वाश्ता सब भूल गए थे. Exactly. लेकिन this was a पैसा वसूल at that time. शाहिद भाई, इन्होंने अभी एक बात की, वार्नर को वो छक्का नहीं मारना चाहिए था हफीज की गेंद पे. क्या कहते हैं वो, क्या ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतना दरिया दिल हो सकता था कि नहीं यार तुमने गलत गेंद कर दी है, कोई बात नहीं, वापस करा. एक बहुत बड़ा दिल होना चाहिए था. Right, exactly. ऐसा ना करता था. लेकिन बहरहाल लास्ट में उसमें न्यूजीलैंड ने अपने पूरा रन इस चक्कर में नहीं लिया. इस चक्कर में नहीं लिया था उन्होंने. एग्जैक्टली. देखिए लेकिन there is a difference. न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, right? Yes, sir. देखिए ऑस्ट्रेलिया हैज प्लेड दीज काइंड ऑफ फाइनल्स अ लॉट ऑफ टाइम्स. ठीक है, दे आर मोर एक्सपीरियंस. उनका तकरीबन 2000 बहरहाल में 1999 से लेके 2019 तक, बल्कि 15 तक कंटिन्यूसली उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, जिनमें से 99% जिससे 2011 का वर्ल्ड कप था आई थिंक, जिसमें वो हारे हैं. उसके अलावा तो दे वर प्लेइंग फाइनल ऑलमोस्ट विद एवरी टूर्नामेंट. तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था. तो मेरे ख्याल में उनको उस एक्सपीरियंस का एक तो एडवांटेज था. दे डिडंट केयर कि कितनी क्राउड बैठा हुआ और कौन शोर कर रहा है. crowd was against them. And against them. And you know the other things as well. But मेरे ख्याल में it was experience, it was handling of pressure. तो अब ये कहना कि वो हो जाता तो ये हो जाता, I think it's not fair. Yes, I agree with मंसूर भाई कि उन्होंने जो टॉस का फैक्टर था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया. We really bowled well up until a certain time. Hassan Ali was a link, weak link. सब हम जानते थे कि ही इज अ वीक लिंक. और आई थिंक इसका एक दफा मैंने सुना था तो हारून भाई भी एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि दे शुड ट्राई देयर बेंच स्ट्रेंथ. Right. तो उसमें अगर ये उस वक्त नामीबिया या स्कॉटलैंड के खिलाफ दे वुड हैव ट्राइड नवाज, विच इज, और यहाँ हमने देखा कि स्पिनर काफी इफेक्टिव है. अगर आप इमाद को उठा के देख लें, जैम्पा को उठा के देख लें, आप इसको उठा के देख लें, शादाब को, शादाब did very well. he was almost unplayable. तो अगर आप उस वक्त ये ट्राई कर लेते, क्योंकि देखिए T20 में 4 ओवर एक माने रखते हैं और उसमें हसन अली ने 44 रन दिए, विच इज लाइक ऑलमोस्ट, और नो बॉल भी कराई, नो बॉल भी उसे कराई जिसमें 6 पड़ गया उसको. Right. तो ही वाज अ लिटिल एक्सपेंसिव. आई थिंक पाकिस्तान ने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि दे शुड हैव अगेन, उनकी आई डोंट नो किस तरह की साइकोलॉजी दी कि विनिंग कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट नाउ. सो वो तो निगेट हो गई. तो आई थिंक दे शुड हैव ट्राइड नवाज, क्योंकि एक तो बॉलिंग भी बहुत अच्छा करता है, फील्डर भी बहुत अच्छा, और बॉलिंग भी वो बैटिंग भी कर लेता है. तो दे शुड हैव ट्राइड हिम फॉर दिस वन. एक सरप्राइज भी हो जाता ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिकॉज दे उनकी एक फितरत में नहीं है स्पिनर को खेलना. Right, सही right, माना. right. तो चले, इट्स अ लेसन लर्न्ड It's फॉर a पाकिस्तान. lesson अभी learned, बहुत काम है पाकिस्तान के लिए आगे. Absolutely. जोसेफ भाई, सो आपका जो एक मेरे ख्याल से सेंटेंस था, इफ पाकिस्तान प्ले एज अ वन यूनिट दे कैन डिफीट एनी टीम. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ, राइट? What do you say about? They kept my shoulder high, so now they kept my head high.
I'm so happy that Pakistan played as a unit till the last game. The only thing that I regret and मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लगा कि वो पूरा गेम जितना भी गेम खेले they were playing with that 11 players that they have already played with. I would have wanted to see they utilize some other players more, like in different games with different teams. They could have seen their bench strength, and then they could have bought a nice at this game against Australia. But again, nothing for Pakistan to lose at this. They have held their heads high. They have played a very good tournament. They came in this tournament as ऐसा टीम आया, पाकिस्तान ऐसा एक टीम आया था ये टूर्नामेंट में कि वो पता भी नहीं जीतेगा कि नहीं. But Pakistan has always been a fighting combination. Their team, in any kind of aspect, they've always been a team that would fight for anything. And इस बार उन लोगों ने prove करके दिखाया. But what I'm going to say about Hassan Ali, I'm not going to blame him for anything what is there, but it's a game pressure. Anything could have happened with any players. Like you said, आपने बोला था ना कि Warren ने कैच छोड़ा, सब लोग ने, कई लोगों ने कैच छोड़ा. But हसन अली ने ऐसा एक सिचुएशन पे कैच छोड़ा कि हो सकता था कि गेम टर्न हो सकता. Australia on the other hand, I was not expecting that. The way that Wade played was such a turning point for Australia. And Australia ऐसा एक टीम है, जैसा शाहिद भाई ने बोला कि ऐसा हर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में they have always come to the last moment, either the finals or semi-finals, and they have always given 100% in their game. But to see a future from here, I see that Pakistan needs to build their team with more youngsters now, because you're going to see a lot of these veterans leaving the team because of their age. They need to build Pakistan, and I'm sure if they can build a very strong unit, we will see that glory days of Pakistan back again. डेफिनेटली. और जिस तरीके से पाकिस्तान का एक यूनिट बना है, राइट, और जो जोसेफ भाई ने कहा कि वेटरन जो हमारे प्लेयर्स हैं वो चले जाएंगे. अब PSL आने वाला है, अगले साल फिर PSL होगा. अगले साल पाकिस्तान के लिए अगर सिर्फ पाकिस्तान की टीम को एनालाइज किया जाएगा, देयर आर लॉट मोर टूर्नामेंट्स कमिंग इन, राइट, फॉर पाकिस्तान. तो उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे. T20 ओवरऑल, राइट, जो रोज के हमारे एनालिसिस थे उसमें भी हम यही कहते थे कि इस दफा का T20 बिल्कुल डिफरेंट हुआ है, राइट. मैचेस वर सुपर्ब, राइट. क्वालिटी हमें बॉलिंग देखने को मिली, क्वालिटी बैटिंग देखने को मिली, क्वालिटी मैचेस देखने को मिले. ओवरऑल नेल बाइटिंग थे ज्यादातर मैचेस. आखिरी 3 ओवर में फैसला हो रहा है कि कहानी क्या होने जा रही है. तो इंडिविजुअली बताएं, हारून भाई से स्टार्ट करते हैं, कैसा लगा T20 ओवरऑल एज अ टूर्नामेंट एज अ होल? This was a different tournament in terms of the spirit of the cricket, क्योंकि अगर कोई प्लेयर हर्ट भी हो रहा था किसी टीम का, तो दूसरे ऑपोजिट प्लेयर जो है वो जाके उसको पूछ रहा था कि भाई आर यू ओके. जैसे रिजवान के जो है वो बॉल लगी तो एरन फिंच ने उनसे जाके पता किया कि भाई आर यू ओके. तो जो एक बॉन्डनेस और एक जो स्पोर्ट्समैनशिप थी वो ज्यादा नजर आई, अपार्ट फ्रॉम दैट 6 जो कि डेविड वार्नर ने किया. But again, it's a spirit of the game. It's a game. देखिए, अभी शाहिद भाई ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया कोई मतलब चने खाने तो नहीं आया ना. They were there to play. एक स्टेटमेंट थी उनकी टोनी ग्रेग की, और जो उन्होंने जो है वो कहा था कि you cannot, if you want to defeat Australia, you have to defeat Australia. They will not contribute towards their own defeat. Yes. Right? You have to defeat that team. And that's a mindset. That's a mindset. तो उसके हिसाब से हम लोग भी लीग रन करते हैं. हमारी USCL में भी ऐसा हुआ था कि एक भाई ने जो है वो रनर मांगा था, दूसरी टीम ने बोला नहीं मैं रनर नहीं दे रहा, आप अच्छे बैट्समैन, exactly. इसमें आपको रनर नहीं दे रहा. तो it's okay, he used it to his advantage, और सही है, at the end of the day रिजल्ट कुछ और आया. बट सेम थिंग, डेविड वार्नर ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने बाहर फेंक दिया. तो yes, this tournament was good. Could have been better, of course, had the result gone into Pakistan's favor, but yes, this tournament was good. Again, it could have been even more. I mean, it could have had a lot more excitement अगर इंडिया भी क्वालिफाई होता है instead of New Zealand. So that would have been a lot more. वो हमें एक और सेमीफाइनल देखने को मिला. That would have been a lot more exciting. और आज अगर हम हार जाते तो हम यहाँ पे जो मरे पड़े. मंसूर भाई क्या कहते हैं? सर ये टूर्नामेंट मेरे हिसाब से देखें 2020 कोविड के बाद ये पहला बड़ा ICC का इवेंट था. और इस इवेंट से पहले
क्रिकेट के अंदर सिर्फ अभी हमारा जो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी कि सिर्फ इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं को लोग जो थे ना वो इंपॉर्टेंस दे रहे थे. इवन न्यूजीलैंड हालांकि टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर आया था, बट पीपल वर नॉट टेकिंग देम एज सीरियसली. फाइनल भी हारेगा हालांकि वो. लेकिन मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप जो है ये दूसरी टीमों को, जिसमें पाकिस्तान हो गई, साउथ अफ्रीका का रिवाइवल हुआ है, श्रीलंका इज ऑन द राइज एज वेल, तो ये इन टीमों के लिए बहुत अच्छा हुआ. नाउ लोग जो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा फायदा अगर कोई बेनिफिशियरी है तो वो टीम पाकिस्तान है. नाउ एवरीबॉडी इज टेकिंग देम सीरियसली कि यार कि ये कोई हल्की टीम नहीं है जो कि आप जिसको मना कर देंगे वजन के नहीं हमने आपके साथ नहीं खेलना. दे प्रूव्ड कि वजन के हम क्वालिटी साइड हैं. इफ यू गोना प्ले विद अस यू विल इंप्रूव एज वेल. हर बंदे को इस टीम को सीरियसली लेना पड़ा. तो इस टूर्नामेंट के बाद से आप देखें साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट से पहले जो थी वो बिल्कुल डाउन एंड आउट थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो भी आखिर तक लड़ते रहे. श्रीलंका ने भी अपने आप को अच्छा खासा इंप्रूव किया. सो फॉर मी ये टूर्नामेंट शायद इतना ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं रहा जितने शायद बाकी पिछले रहे जो इंडिया में हुआ था स्पेशली, लेकिन उसके बावजूद भी इस टूर्नामेंट से जो चीजें एक्सट्रैक्ट करने वाली है वो फॉर द गेम ऑफ द क्रिकेट वो बहुत बेनिफिशियरी रही है. अब आपके पास देखिए जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीमें होंगी इस कंपटीशन के अंदर उतना मजा आएगा. अब नेक्स्ट टूर्नामेंट के अंदर अब जब ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है पाकिस्तान वुड स्टार्ट एज अ फेवरेट्स, वन ऑफ द एग्जैक्टली क्योंकि वो उन्होंने एक अपना ये समझे कि मार्क छोड़ दिया. मतलब अब लोग जो है वो हल्के में नहीं लेंगे पाकिस्तान का. बोलेंगे कि भजन के हाँ नहीं दिस इज द टीम जिसको अगर आपने हराना है तो यू हैव टू लाइक बीट देम विद द टीथ ऑन. ओके सो पाकिस्तान के टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा और ओवरऑल क्रिकेट के लिए टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा. सो आई थिंक कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर इस किस्म के टूर्नामेंट्स अभी अगला 9 महीने के बाद ही मेरा ख्याल में अगला वर्ल्ड कप है. राइट. सो ज्यादा टाइम नहीं है. तो अभी ये दुख हल्का होगा तो दोबारा नए की तैयारी होगी. बैक टू बैक राइट. जैसे शायद भाई अगले 9-10 महीने में एक और वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद 50-50 का है. तो वी डोंट हैव मच टाइम. तो क्या देखते हैं कि हमारी इतनी जैसे जो टीम अभी है हमारी, कैन वी टेक द सेम टीम टू द नेक्स्ट ईयर या हमें कुछ और इंप्रूवमेंट, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ हमें चेंजेस और कुछ लानी चाहिए हमें. तो ओवरऑल पहले तो T20 कैसा रहा राइट, और अब नेक्स्ट जो हमारा जो टारगेट है वो डिफरेंट अदर जैसे बांग्लादेश में हम पाकिस्तान जाएंगे राइट, फिर इंग्लैंड का टूर है. तो T20 कैसा रहा पहले ये बताएं, उसके बाद फिर हम दूसरे टूर्स के बारे में आते हैं. मेरे ख्याल में आफ्टर कोविड, जैसा भी मंसूर भाई कह रहे थे, कोविड ने हम लोगों को उस सिचुएशन में पहुंचा दिया था कि हम लोग बहुत परेशान थे, मेंटली हम लोग स्ट्रेस्ड आउट थे, बहुत हम ज्यादा मतलब वी वर रियली डन बेसिकली. इस तरह के टूर्नामेंट जब आते हैं तो दे मेक यू फील लाइक यू आर अलाइव. आपने जितनी व्यूअरशिप इसकी देखी मेरे ख्याल में आज तक शायद ही कभी, स्पेशली जो इंडिया के मैच के साथ हुआ, more than 2 billion I have heard that people were watching that match. So just imagine the amount of enthusiasm, the amount of interest that this tournament generated. और इसकी सबसे अच्छी बात ये, एक तो ये बहुत छोटा होता है, शाम को लगाओ रात को खत्म. 3 घंटे का होल डे. रूल्स इसके बहुत सिंपल हैं. और इसकी जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर है, दैट इज व्हाट इट मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल. किसी को नहीं पता आखिरी बॉल जब तक नहीं हो जाएगी. और मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स इसी तरह हुआ है. इसमें पब्लिक व्यूइंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. टेस्ट चैंपियनशिप हुई बट हार्डली सब जो क्रिकेट जानते हैं मेरे ख्याल में उन लोगों को ही पता चला कि न्यूजीलैंड हैज वन द टेस्ट चैंपियनशिप. लेकिन इस टूर्नामेंट का अगर आप किसी से छोटे से मोहल्ले में भी जाते हैं, छोटे से बच्चे से भी पूछ लें वो आपको बता देगा. सो दिस टेल्स यू हाउ मच एंथुसियास्टिक पीपल वर ग्लूड टू देयर टीवीज. जितना स्टेडियम में आप लोगों ने देखा जो एक क्राउड आया, प्लस वो जो एक इंटरेस्ट होता है, मतलब रात को अक्सर तो बंदा सोता नहीं है सुकून से कि टुमारो यू हैव टू वेक अप एंड यू हैव टू वॉच टीवी. तो मेरे ख्याल में इस तरह का टूर्नामेंट जो होता है इट्स रियली गुड. क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, व्यूअरशिप के लिए बहुत अच्छा है. नाउ आई हैव हर्ड दैट आफ्टर सॉकर क्रिकेट इज नंबर 2 गेम इन द वर्ल्ड. तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी, और इसमें T20 का बहुत बड़ा, आई बिलीव जितनी लीग्स दुनिया में हो रही हैं, आप IPL को ले लीजिए, आप BPL को ले लीजिए, दिस इज क्रिएटिंग इंटरेस्ट फॉर पीपल. और जितने लोग इस कोविड की वजह से स्ट्रेस में थे या दे वर हैविंग अ बैड टाइम, दिस हैज स्विच्ड दैट मोड इनटू अ एग्जैक्टली वो दूसरे एंड पे आ रहे. वेरी गुड जोसेफ भाई. सो अब T20 की तो हमने काफी बात कर ली कि कैसा रहा टूर्नामेंट एंड वी रियली लाइक्ड इट राइट. आपकी तरफ में आता हूं कि अब जो नेक्स्ट टूर्नामेंट्स आने वाले राइट, अब पाकिस्तान का बांग्लादेश
کا ٹور ہے, انگلینڈ پاکستان وزٹ کرے گا, انڈیا کا نیوزی لینڈ کا ٹور ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک اب یہ جو اتنی کرکٹ ہو رہی ہے, would it impact the next World Cup or would it impact in a positive or a negative way? What do you think about it? Let's start with India and New Zealand now. New Zealand is already now in the final. وہ لوگ final میں پہنچ گئے. They have a winning combination. وہ بھی World Cup کی نظر بھی دیکھ رہے کہ now ہم لوگ بھی final میں آ چکے ہیں, so they have more chances in the next for the World Cup. So they are going to enter that World Cup as favorite. انڈیا کی طرف سے ابھی ایسا ہو گیا کہ ایسا میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ کیپٹنز کو چن رہے, T20 کے لیے کیپٹن چن رہے, ون ڈے کے لیے کیپٹن چن رہے. کوہلی is going to be out from captaincy, he's only going to be doing the test captaincy. So there's so much talks going around now. Rahul Dravid is coming as a head coach. Now this is where it's going to be a very different game plan now. Dravid has proved himself over and over again as a coach for under 19. He's been a one of the best coaches for an under 19 team, and most of the players have a lot of respect for him. Right. So India is going to see a lot of change in their team build up now. دوسرا طرف ابھی دوسرا گیم دیکھیں گے تو پاکستان اور بنگلہ دیش. Now this is the best time for Pakistan to choose a very good and young side to build a team for the next World Cup. Still, I would like to see some experience in the bowling lineup. A few days ago we were talking about this, where if they could have got Mohammad Amir in there, like, you know, an experienced bowler over there. And I think that Pakistan وہ lack کر رہا ہے کہ ایک experienced bowler, fast bowler ہونا مانگتا ہے ادھر. So we need someone over there. Bangladesh, again, I'm not going to talk much about them because they're an unpredictable team in a way, but the teams that I'm going to look out for is, of course, at the moment is Pakistan, India and New Zealand for the next World Cup, because they are in position to change the game, change the whole tournament. So I wish we can see something more like a bit of changes in every team now. دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے, کیونکہ it is going to be good for the next year as well. So ہارون بھائی, بنگلہ دیش کا ہمارا پاکستان کا ٹرپ ہونے والا ہے, انگلینڈ آنے والی ہے, پاکستان کی ٹیم میں دیکھتے ہیں تھوڑی سی ہلچل. دیکھیں وہ تو ہوگی کیونکہ جو ہم ابھی دیر گڈ پلیئر, لیکن جو دو بوڑھے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے, حفیظ اور ملک, obviously یہ ان کا لاسٹ کا پتہ, کیونکہ یہ بابر اعظم کے انسسٹ کرنے پر رمیز راجہ نے ڈالا تھا. تو لیکن شعیب نے پرفارم کیا ہے, شعیب آف کورس یو نو دے آر پرفارمنگ, لیکن بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ گڈ آف اے بیٹسمین یو آر, آپ کی ایک ایج لمٹ ہے. صحیح ہے آپ پرفارم کر رہے ہیں, آپ اچھے کرکٹر ہیں, آپ پرفارم کر رہے ہیں, پیڑ بھی نہیں نکل کے آ رہا اس بندے کا, لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ نے جگہ چھوڑنی ہے اپنی, آپ نے جگہ چھوڑنی تاکہ ایک ینگسٹر آئے جیسے حیدر علی جو ابھی بیٹھے ہوئے, ہی از جسٹ 21 ایئر اولڈ, ہی ہیز اے لاٹ ٹو لرن. جب ان کو ایک اسپاٹ نہیں ملے گا تو وہ کہاں سے آ کر اپنے آپ کو پروف کریں گے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو, اور پی سی بی نیڈس ٹو ورک آن گائز لائک حسن علی یا نواز, تاکہ ان کو پتا ہو کہ یار پریشر سچویشن میں ہم نے کیسے بالنگ کرنی ہے یا کیسے بیٹنگ کرنی ہے. اس کے علاوہ جو نیکسٹ ایئر ہے, آئی تھنک اٹس فل آف کرکٹ, اٹس ویری ایکشن پیک. نیوزی لینڈ جو ہے وہ انڈیا جا رہا ہے, پاکستان بنگلہ دیش جا رہا ہے, پھر اس کے بعد انگلینڈ آسٹریلیا پاکستان آ رہے ہیں, آئی پی ایل ہو رہا ہے, ایشز ہو رہا ہے, پی ایس ایل ہو رہا ہے, کیریبین لیگ ہو رہی ہے, بگ بیش ہو رہا ہے. تو جو 2022 جو ہے اٹس ویری پیک, اور T20 کا ورلڈ کپ بھی ہو رہا ہے. T20 کا ورلڈ کپ ختم ہوگا, پھر پی ایس ایل شروع ہو جائے گا, اور پھر ایشیا کپ شروع ہو جائے گا. تو آئی تھنک آئی سی سی کی جو ریسنٹ میٹنگز ہوئی تھیں ان دا اسپرنگ, آئی تھنک دیٹ ہیز بین پروڈیوسنگ اے فروٹفل ریزلٹ, اور لیٹس ہوپ کہ وی گیٹ ٹو سی گڈ کوالٹی کرکٹ. we'll see انشاءاللہ. اور جس طریقے سے ہمارے ڈفرینٹ جو ہے وہ جو ٹورنامنٹس انہوں نے گنوائے, جی ٹی اے میں بھی کافی کرکٹ ہو رہی ہے, ایوری ویئر از بین پلئنگ. انڈور شروع ہو گئی ہے, یو ایس سی ایل ہم بھی انڈور شروع ہم نے کی ہے. تو اوور آل آپ کرکٹ کے حوالے سے دیکھیں تو اٹس اے برائٹ فیوچر کمنگ اپ ایز ویل, رائٹ؟ یس ڈیفینیٹلی. دیکھیں کرکٹ جو ہے وہ اب جیسے جیسے یہاں پہ کینیڈا میں بھی ہمارے امیگرینٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, تو کرکٹ کا پیشن آلریڈی جو ہے وہ کرائے گا. پہلے
ہم لوگ صرف برمپٹن تک محیط تھے تو اب جو ہے یا ٹورانٹو تک تھے, اسکارگو تک, تو اب ملٹن میں بھی, تو ہیملٹن میں بھی. سو ناؤ the game is evolving by itself. اور جو لوگ بھی ہیں, جو ایون جو لوکل یا جس کو گورے جو ہیں, وہ خود بھی آ کے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کھیل رہے ہو تم لوگ, ہم کیسے کھیل سکتے ہیں, ہم کیا. سو ناؤ دا تھنگ از کہ یہ گیم اٹ سیلف جو ہے وہ اب انٹرنیشنلی ایوالو ہو رہا ہے, اور جس حساب سے آگے کرکٹ آنے والے دنوں میں آ رہی ہے, آئی تھنک کہ ہمیں ایک اچھی اسٹرانگ کمپیٹیٹو کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. جو ایک کسی بھی ایک اسپورٹس کے اندر جو ہے نا وہ کمپیٹیٹیونیس اگر نہیں ہوگی تو وہ اسپورٹس ختم ہو جائے گا. بالکل. اب آپ دیکھیں پاکستان سے ہاکی ختم ہو گئی کیونکہ ہم لوگ کمپیٹیٹو رہے ہی نہیں. نیشنل اسپورٹ ہے نیشنل اسپورٹس ہے پاکستان کا. انڈیا کمپیٹیٹو ہے تو آج انڈین ہاکی بھی اس لیول پہ کھیلتی ہے کہ اولمپکس میں میڈل لے کر آتی ہے. لیکن انڈین اگر ہاکی کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ گورنمنٹ کی ایک بیک بھی ہے انڈین ہاکی کا. ہماری اپنی بڑی پھٹیکیں We ہیں, don't do it. ہم آٹے چاول سے ہی نہیں نکل پا We don't do it. تو لیکن جو اٹ سیلف جو کرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو آگے آنے والے دنوں کے اندر جو پاکستان ٹیم ابھی بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی, حفیظ آلریڈی آپٹڈ آؤٹ. اب اس کی جگہ ہمیں ینگسٹر کو موقع دینا تو ہم 40 سال کے افتخار احمد کو ڈال رہے ہیں ٹیم میں واپس. سو اب ہم وی آر ریپلیسنگ ایپلز ود انادر ایپل. سو آگے مطلب اگر شعیب ملک کو بھی نکال دیں گے تو ہم چلے ایک حفیظ کی جگہ تو ہم ڈال دیں, اگر اس کو حیدر علی کو, شعیب ملک کی جگہ کس کو ڈالیں گے؟ وہ ایک اسپاٹ ہے جس پہ خوشدل شاہ بھی جو ہے وہ کمپیٹ کر رہا ہے, تو اس اسپاٹ پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ان کو ریپلیس کرنے کے لیے آیا ان شوز کے لیے ہمارے پاس ایسے بندے ہیں جو ان شوز کو فل اپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. خیر ٹیلنٹ تو ابھی ہر پی ایس ایل میں کوئی نہ کوئی ایک نیا فنکار نکل کر آتا ہے ہمارے پاس. لاسٹ پی ایس ایل سے دھانی نکل کے آیا, پوری قوم بولتی رہی کہ دھانی کو کیوں نہیں کھلا رہے, دھانی کو کیوں نہیں کھلا رہے, وہ ریزرو پلیئر میں تھا, وہ کھیل ہی نہیں سکتا تھا. So people have to aware as well کہ یار کہ what's going on. وہ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں نا, وہ اٹیچ ہوتے ہیں ٹیم کے ساتھ. اب جیسے لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شوزہ چل رہا تھا سرفراز کو کھلاؤ, سرفراز کبھی دھوکہ نہیں دے گا. That's how it all started, right? And سرفراز came in and he performed, اور وہیں سے سرفراز کا کیریئر جو ہے شروع ہوا. اب آپ یہ دیکھیں, آپ نے سینٹیمنٹس کی بات کی نا, کیچ چھوڑا حسن علی نے بھی, پچھلے میچ میں بیئرسٹو نے بھی کیچ باؤنڈری پہ پکڑ گئی, مطلب وہ 6 دیا اس نے بیسکلی. لیکن بیئرسٹو کا ٹریٹمنٹ اور ہمارے ٹریٹمنٹ ڈفرنٹ ہے, الگ ہے بالکل. اب اگر وہ انگلینڈ میں رابی کین گول چھوڑ دے گا تو گورے اس کو بھی نہیں بچنے والے. ایگزیکٹلی, وہ وہاں پہ جب کسی نے اٹیچ ہوا, دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹی اوور دیئر. بٹ ہم لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ اب جو ایک اچھی چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, جو اچھی چیز مجھے لگ رہی ہے کہ پیپل آر گیٹنگ ٹالرنٹ اور absorbent with the defeat as well, which is good sign. ایک اسپورٹنگ نیشن کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جیت کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیفیٹ کو بھی جو ہے وہ ایکسپٹ کریں, اینڈ دیٹ از ہاؤ یو پروسیڈ. گڈ. تو شاہد بھائی, ہم نے بات کی پاکستان جو ہے اب ڈفرینٹ جگہوں پہ کھیلے گا جا کے, کافی ٹورنامنٹس ہونے والے ہیں, ورلڈ کپ جو ہے آ رہا ہے, کافی زیادہ کرکٹ ہونے والی ہے اوور آل. جو ہمارا پی سی بی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پی ایس ایل کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اتنا کمپیریٹو یا کمپیٹیٹو پی ایس ایل بنا سکے گا اوور آل؟ کیونکہ دیکھا جائے تو پی ایس ایل میں سے جو لڑکے نکل رہے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے پروسیس میں جو ہے وہ آ رہے ہیں ٹیم کے حوالے سے. واٹ ڈو یو تھنک, پی ایس ایل اتنا جو ہے کیپیبل ہے کہ کر سکے گا؟ کیونکہ اب آئی پی ایل پہ کوشچن مارک ہونا شروع ہو گیا, رائٹ, آفٹر انڈیا. کیونکہ اب یہاں پہ اسٹیٹمنٹ یہ آ رہے ہیں کہ آئی پی ایل کی وجہ سے انڈین ٹیم جو ہے وہ بیک آؤٹ پہ آ رہی ہے. تو پی ایس ایل کیا اب شائن ہو پائے گا اس پورے کے میں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ آف کورس یس. آپ دیکھیں جتنی ینگ لاٹ آئی ہے ہمارے پاس, جتنے یہ ینگ لڑکے آئے ہیں, ٹیک شاداب فار دیٹ میٹر, ٹیک فخر فار دیٹ میٹر, یہ سب وہیں سے ہیں. اگر یہ پی ایس ایل نہیں ہوتا ہم ان کا نام بھی نہیں سن سکتے. بالکل. تو میرے خیال میں پی ایس ایل از کائنڈ آف اے نرسری, جہاں پہ آپ ایک نیا لڑکا لا کے, جس طرح عاقب جاوید نے کام کیا, اس نے حارث رؤف کو وہ لے کر آیا, تو اس طرح سے اگر ہم ہنٹ کریں تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف ٹیلنٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آپ پاکستان کے کسی ہیلی کاپٹر سے آپ چھٹی کے دن چلے جائیں, نیچے آپ کو روڈوں پہ, مین روڈ پہ کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. لوگوں نے کھیلی ہے, ہم وہیں سے تو کھیلی. تو اس طرح سے پی ایس ایل از اے ویری گڈ پلیٹ فارم. آئی پی ایل کی ایک اپنی جگہ ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, دنیا کی سب سے بڑی وہ لیگ ہے. لیکن اگر آپ ابھی بھی آبزرو کریں تو آئی پی ایل میں وہ کوالٹی آف پلیئر انڈیا نہیں پروڈیوس کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ابھی بھی وہ روہت اور وہی آپ کو وراٹ کوہلی اور وہی 3 جو ٹاپ 3 ہیں, راہل, گھوم پھر کے انڈیا اسٹل اسی پہ ہی ریلائی کرتا ہے. آپ ایشان کشن کو دیکھ لیں یا مڈل آرڈر اس کا دیکھ لیں, اٹ از اسٹل ولنریبل. تو ابھی بھی آئی تھنک پی ایس ایل از اے ویری گڈ place to come into, and then
दैट इज द प्लेस जहां पे आप अपने प्लेयर्स को ग्रूम कर सकते हैं, उनको सीनियर्स के साथ रख के. और विद रिगार्ड्स आई थिंक शोएब और हफीज का इस वर्ल्ड कप में होना, इट वाज जस्ट साइकोलॉजिकल. फिजिकली उनका वहां प्रेजेंस जो थी, इट वाज मेकिंग अ डिफरेंस. ठीक है, बिकॉज ऑफ वो बाबर को भी एक साइकोलॉजिकल सुकून था कि देयर इज समबडी एट द बैक हु विल टेक केयर ऑफ इट, एंड दे डिड देयर जॉब. आप देखिए तो उसमें शोएब मलिक ने भी बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा परफॉर्म किया. लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हमें नया ब्लड लाना है, एंड पीएसएल वुड बी दी बेस्ट प्लेस टू गो टू. अनफॉर्चुनेटली हम जब भी टेस्ट मैच खेलते हैं 2 से ज्यादा नहीं खेलते, और वो भी आफ्टर लॉन्ग टाइम ही नहीं है सर हमारे पास. कहां टेस्ट मैच खेलेंगे सर, हमारा स्केड्यूल ही है वो बैक टू बैक चल रहा है. T20, दिस इज आवर वर्ल्ड राइट नाउ. तो मेरे ख्याल में पीएसएल इज वेरी गुड, जैसा आपने कहा, इट्स अ गुड प्लेस, क्योंकि फाइनेंशियली भी एक प्लेयर बहुत सिक्योर फील करता है अपने आप को कि ही इज इन अ लीग. तो जब फाइनेंशियली आप सिक्योर होते हैं तो देन आपकी परफॉर्मेंस पे भी उसका इफेक्ट आता है. ट्रू, बाय डिफॉल्ट आप पे वेरी गुड, वेरी गुड. सो जोसेफ भाई, आईपीएल, क्या ये कहना सही होगा कि आईपीएल जो है वो थोड़ा सा आईपीएल को बैकलैश मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर? क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर हियरिंग, दिस इज व्हाट इन द न्यूज़ राइट नाउ, कि कुछ बड़े प्लेयर्स कह रहे हैं कि यार आईपीएल नहीं खेलना भाई, बहुत हो गया. राइट, व्हाट डू यू थिंक? Well, it's not going to change much. ऐसा ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आईपीएल ऐसा है कि इंडिया ऐसा क्रिकेटिंग नेशन है, तो फॉलोअर्स तो होंगे, but given the fact that now people are going to be looking around at different leagues now, like example, like Shahid bhai was saying, PSL, it's a growing league. ऐसा लीग, ऐसा बड़े बड़े नाम, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स भी आ रहे. पाकिस्तान कैन बी अलाउड टू प्ले इन अदर कंट्रीज एंड ऑल्सो लाइक प्लेयर्स मूव अराउंड, तो अच्छा है, अच्छा होएगा, ऐसा भी हो. एंड ऑल्सो T20 now has become a big craze. If you आप लोग ऐसा देख रहे थे कि T20 American qualifiers, Canada was playing really good. And they reached the finals, and there was a super over between US and Canada, but Canada lost, but they played a very good tournament. So ऐसा time में अभी IPL, they have to also look how they are going to get back everything, because there is a bit of backlash now, a bit of for that now. But let's hope, like, it's a game of cricket, and if you're a lover of cricket, you will always support any league or anything. So I don't, maybe let's see what's going to happen down the line. जैसा जोसेफ भाई, मैं इसमें जो मुझे जो थोड़ी सी बात और लगी हुई, ये लगी कि आप आईपीएल उस वक्त करवा रहे हो जब आपके वर्ल्ड कप में बहुत कम टाइम रह गया था. ठीक है, आप चाह रहे थे कि प्लेयर्स को वो एक कंडीशन से थोड़ी सी वाकफियत हो जाए, and they should be prepared for it. लेकिन by doing that you did it the wrong way. आपने उन प्लेयर्स को 15 दिन का टाइम दिया वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में, और जैसी हीट आप देखते हैं यूएई में होती है. इफ यू सी, वो कल मैं मिचेल का देख रहा था, उसने हेलमेट यूं किया तो उसमें बाकायदा फव्वारे निकल रहे. तो इतना बर्न आउट होने के बाद यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि वो उसी लेवल की परफॉर्मेंस देंगे इतने बड़े टूर्नामेंट में. तो आई थिंक ये फैक्टर थोड़ा सा जो है ना, आप बर्न आउट मत कीजिए, अपने जो टैलेंट है उसको प्रोड्यूस कीजिए, बट गिव देम एम्पल टाइम टू प्रिपेयर देमसेल्व्स. आई थिंक जो नेक्स्ट ईयर इन्होंने प्लान आउट किया है, दैट्स हाउ दे विल लुक इनटू दैट, और उसी हिसाब से फिर हम देखेंगे कि कौन सी डेट पे क्या हो रहा है. तो बिफोर वी कंक्लूड दैट, फाइनल है सर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, उसके ऊपर व्हाट डू यू थिंक, क्या आपकी सोच कहती है कि हु वुड गेट द कप दिस टाइम? I would really want New Zealand to win for a change. I think they have been in a final quite a few times. 2015 में भी आए बेचारे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार गए, 2019 में भी फिर वो हार गए, अब भी एक और फाइनल खेलेंगे. सो और मजे की बात ये कि उनका स्क्वाड जो है वो मोर और लेस सेम ही है. राइट. तो आई वुड रियली वांट देम टू विन फॉर अ चेंज, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो बोरिंग हो जाता है. राइट. हमारी लीग में भी कुछ टीमें जीतती हैं, हम कहते हैं यार ये क्या हुआ. We'll talk about it later on that. तो मंसूर भाई क्या कहते हैं सर, न्यूजीलैंड की फाइटिंग टीम है, फाइटिंग बिल्कुल. लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जो है ना, उसने वापस आया है और जो क्रूज लेवल पर आया है अभी, और जिस थ्रॉटल पे उनका जो है भी मोरल है, पाकिस्तान को एक क्रंच सिचुएशन में, एक क्रंच मैच में डिफीट करने के बाद आप फाइनल में जा रहे हैं, तो वो उनका मोरल जो है ना वो उस वक्त पीक पे होगा, बिल्कुल पीक पर होगा. न्यूजीलैंड हमेशा से कलेक्टिव, काम, कंपोज टीम रही है, कैलकुलेट करके अपने
اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ کھیلنے والی ٹیم ہے. سو ڈیوڈ کانوائے از آؤٹ فار دا فائنل. اب ان کی جگہ کون آتا ہے ٹیم کے اندر؟ سو یہ کانوائے کا جو ہے وہ ٹاپ پرفارمر رہا ہے اس وقت. سو میں ایگزیکٹلی اینڈ ہی از اے کیپر ایز ویل. تو میرا خیال میں جو ہے وہ میں آسٹریلیا کو دیکھ رہا ہوں, شاید آسٹریلیا جیتے. شاہد بھائی کیا کہتے ہیں سر؟ سر آسٹریلیا کو ہروائیں. دل کی بڑاس نکل رہی ہے آپ کی یہاں سے. اور سیکورٹی جو ہے نیوزی لینڈ کی ٹائٹ کرے تو اٹس in the middle, whoever win, you are good with that. جوزف بھائی کیا کہتے ہیں سر؟ آسٹریلیا نیوزی لینڈ. اب میرے کو نیوزی لینڈ جیتنا مانگتا ہے, لیکن جیسے آسٹریلیا نے کھیلا تو اٹس گونا بی اے ویری کلوز فائنل. دونوں ٹیم نے سیمی فائنلز میں سیکنڈ بیٹنگ کر کے چیز کر کے جیت گئے. سو اٹ از گونا بی اے both, like, it's not going to be a one-sided game. Both teams are going to give their 100%. But I would love to see New Zealand win. Very good. So, and they're due for it. They're due for it because every time they were at, like, every time you would see that they would come into a World Cup and they were in a winning situation and they would lose it. And I'm hoping this time that وہ لوگ فائنل میں آگے وہ جیتنا مانگتا ہے اس بار. I hope they don't choke. they get the I hope they don't so choke. predictions کی ہم بات کر رہے ہیں. ہماری جو ایوری ڈے جو ہم predictions کرتے ہیں, that's what I was telling to the viewers, ہماری کو 85% prediction جو ہے وہ صحیح رہی, right, based on ہمارا analysis and based on جو بھی ہم نے کیا, right. اور ماشاءاللہ جو پینلسٹ ہمارے تھے, ہم لوگ کافی, ہر کسی کا کرکٹ سے تعلق ہے, ESCL کے حوالے سے اور ڈفرینٹ ادر جو ہے وہ کوچنگ کے حوالے سے اینڈ آل دیٹ. اچھا, پلس جو ہمارا پروگرام جو دیکھا گیا اوور آل, رائٹ, اٹ واز مائنڈ بلوئنگ, رائٹ. جو ہمارا سوشل میڈیا پہ جو ہمیں ویوز ملے, اگر میرے جو پروڈیوسر اگر وہ دکھانا چاہیں آن ٹاپ آف اٹ, سو وی ہیو ریسیوڈ اوور ویلمنگ رسپانس, رائٹ. سو اگر آپ ویوز دیکھیں یہاں پہ 3.3, 4,000, 7,000, 5,000, مطلب those are the views which we were getting on social media, and this is only social media, right. Then we have views on TV channel as well, which is way more than that, right. So I would like to say thank you, right, for watching Sports Roundup. Can I add one more thing? جی بالکل. Sorry to disrupt you. یہ جو ویوز آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ میچ کیجئے جو باس ٹی وی آتا ہے یوٹیوب پہ, جس میں راشد لطیف اور وہ سارے ایکسپرٹ پر, ان کے ویوز ہوتے ہیں 1.1 اور سم ٹائمز 980, 580, 760. تو if you compare that with this is no, mashallah, overall, exactly, overall اگر کیونکہ اگر ویسے آپ دیکھا جائے تو we tried our best کہ ہم ایوری ڈے جو ہے وہ ایک انالیسس, اٹ واز ناٹ مور دین 10 minutes or so, 10-15 منٹ کی, کیونکہ اوور آل دیکھا جائے تو کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا میچ دیکھنے کا, کیونکہ ایوری بڈی واز ورکنگ. یہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ٹورانٹو 360 کی طرف سے ہم نے دیا, رائٹ, ٹو دا آڈینس, اینڈ آڈینس لوڈ اٹ, آڈینس لائک اٹ. کل میں ایک ایونٹ بھی گیا تھا, وہاں پہ مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ یار یو گائز ور امیزنگ, رائٹ, کیونکہ دا وے یو ور کمنگ اپ, انالیسس, پریڈکشنز, رائٹ. آپ لوگ ایک سیٹ, آپ کسی پلیئر کے اوپر بات نہیں کر, آپ ایک اوور آل جنرل بات کرتے تھے, which was very good, and it all happened because of all of you guys. نہیں, thank you so very much actually. Thank you very much. Toronto 360 کا بہت شکریہ. It's been a great opportunity to talk to you guys, talk to the audience. ایسا موقع بہت کم ملتا ہے ایسا آڈینس سے بات کرنے کے لیے, اور ہمارا ٹیم جو ہے وہ بہت اچھا ٹیم ہے, and we love being together. That's also one part of it. although we do have our disagreements. Let's take it aside, but even though, So thank you to Toronto 360 TV and yourself exactly. for giving Thank you us Naeem the bhai, and thank you Naeem bhai, thank you 360, Toronto 360, and thank you to all the viewers جنہوں نے ہم سب کو دیکھا اور ہمارے ان ویوز کو اپریشیٹ کیا. اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ ہم انشاءاللہ فیوچر کے اندر بھی اپنے اس قسم کے اور آپ کو مشہور بھی ہو گئے نا اب آپ کا. So this was it folks, thank you so very much for watching the Sports Roundup. ہم نے کوشش کی کہ آپ کو جتنا زیادہ جو ہے انگیج رکھ سکیں T20 کے حوالے سے, ہم نے رکھا. پاکستان کی ہم آل دا ساری جو بیسٹ وشز پاکستان کے لیے ابھی بھی آگے بھی, رائٹ. اور کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو مزید اپڈیٹ رکھیں. جتنے ہم نے ٹورنامنٹس کے بارے میں بات کی کہ 2022 would be a busy year for cricket, انٹرنیشنلی بھی اور ود ان جی ٹی اے بھی بہت ساری نئی چیزیں ہم بھی کرنے والے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر چیز سے اپڈیٹ رکھیں. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دا اسپورٹس راؤنڈ اپ. دس از نعیم طارق کیانی signing off. See you inshallah in the next episode.
जो खरीदें मिल्टन से ही खरीदें। મિલ્ટનમાં નાના વેપારીઓના દુકાનમાં ખરીદી કરી બિઝનેસ આપો। মিল্টনে আসুন, স্থানীয় দোকানে বাজার করুন। تسوق محليا في ملتن। தேசியத்தை அகையான் மில்டன் வலின் படுகா। உங்களோட வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களே மில்டன்லே வேண்டுங்க। मिल्टन ही खरीदते हो कि मिल्टन ही खरीदारी करो। मिल्टन में रहते हैं, मिल्टन में खरीदारी कीजिए। जिंदगी खर्च हो जाती है अपनों के लिए रकमें बनाने में, हमें अपना बना लो थोड़ी रकम बचाने में। आज ही कांटेक्ट करें इंश्योरेंस बाजार के ऑफिस अपनी ऑटो, होम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 4168171313 या विजिट करें www.insurancebazar.ca। आपकी बचत और आपके मुस्तकबिल का मुहाफिज इंश्योरेंस बाजार। This guy says he's for the little guy. But what happened to that? Every chance he gets, Ford fails your family. When workers need paid sick days, Doug denies them. When local businesses need help, Ford sides with the big box stores instead. And with a crisis in seniors' care, Ford protects owners' profits instead of protecting the people who live there. For the little guy? Please. Doug Ford, here for his buddies, not for you. A message from Ontario's NDP. सेहतमंद दांत तंदुरुस्ती की अलामत। एफ्लक्स डेंटिस्ट्री पर डॉक्टर यास्मीन उमर और उनकी टीम आपके दांतों की हर तरह की बीमारी का इलाज करती हैं। 1055 कैनेडियन प्लेस, यूनिट 103, मिसिसागा, एग्लिंटन और टॉम्पकन का इंटरसेक्शन। टीथ व्हाइटनिंग, इमरजेंसी डेंटिस्ट्री, रूट कैनाल, मेटल फ्री क्राउन्स, डेंटल एक्सट्रैक्शंस, डिजिटल एक्सरे, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। इसके अलावा इनविजिलाइन क्लियर ब्रेसेस के लिए आज ही तशरीफ लाइए एफ्लक्स डेंटिस्ट्री। सीनियर्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए 10% स्पेशल डिस्काउंट, फ्री इनविजिलाइन कंसल्टेशन एंड $1,000 ऑफ ऑन इनविजिलाइन। तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं। मजीद मालूमात के लिए आज ही कॉल कीजिए 905-232-3133। इट्स 905-232-3133। अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की जरूरत होती है और हमारे साथ मौजूद है चैंपियन डेविड हिमोफार्ब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157। Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family,
to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुल्क और वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कैनेडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com. She knows who she is. She knows who we are. How tough this pandemic has been and what needs to be done to get us back on track. Andrea Horvath is a fighter for people, for workers on the front lines, families trying to find a home they can afford, seniors who deserve better care, and kids needing safer schools and a future to look forward to. Fierce, loyal, optimistic. I'm Andrea Horvath. I'm proud to be on your side. A message from Ontario's NDP. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Jeevan Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com.